Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 71 for that topic sexual reproduction in flowering plants. Now in the last 2-3 videos if you'll go there, you will see that we have completed the structure of ovule or megasporangium. Actually this is very important article and there we have also covered the development of female gametophyte. पर इस आर्टिकल पे अब अगर आप जाएंगे तो नीट में भी बहुत सारे MCQs आते हैं एंड नॉट ओनली दैट इवन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर विच टू बी रिमेंबर्ड देयर टू आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली. उसको मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँगा इस वीडियो में. अब ओव्यूल के दो मेन पार्ट्स हम देखते हैं. एक तो पहली बात है ये जो टर्म्स मैं लिखूंगा, दैट ट्राई टू रिकलेक्ट दैट. Number 1 funicle, number 2 hilum, then number 3 integuments, okay, then number 4 micropyle, then that chalazha, okay. ये एक एक टर्म देखो आप, ये आपको बिल्कुल रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दैट, ओके. देन न्यूसेलस. Then we have to learn the term like that, MMC. Then we have to learn that megasporogenesis. Then very important points regarding that, megaspore tetrad. Megaspore tetrad. Okay. And then that डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. इस फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक, उसका अनदर नाम जो है वो क्या है, एम्ब्रियो सैक. तो चलो पहले इतने तो पॉइंट्स हम रिकलेक्ट कर लेते हैं. इफ यू हैव स्टडीड ऑल दैट पॉइंट्स वेल, यू विल डेफिनेटली गो थ्रू दैट वेरी क्विकली. चलो रिवाइज करो. फ्यूनिकल क्या है? व्हाट इज द फ्यूनिकल? फ्यूनिकल इज द स्टॉक ऑफ ओव्यूल. पहले बताओ ओव्यूल क्या है. व्हाट इज ओव्यूल? Ovule is egg producing organ. Very important egg producing organ of flower, that is ovule. उसका दूसरा नाम क्या है? The another name of that is megasporangium. The another name is megasporangium. कहाँ पर है ये? That is present inside the ovary. ovary किसका पार्ट है? Gynoecium, carpi. आंसर देते जाओ. Isn't it? Then another is there, that ovule is egg producing organ, is also called as forerunner of seed. ये भी मैंने बताया था, आगे चल के इससे ही सीड बनने वाली है. And that's why forerunner of seed is megasporangium or ovule. Very clear. Then ovule has got that part like funicle. Funicle क्या है? Stalk of the ovule. This is the stalk of ovule by which it is attached to the placenta of ovary. Hilum क्या है? Point of attachment of ovule. Point of attachment of funicle with the body of ovule. Funicle and body of ovule. उसको hilum कहते हैं. Okay. Then integuments are protective coverings. They are the protective covering, and there are two here in angiosperms, and that's why they are called, that angiospermic ovule is called as bitegmic. Gymnospermic ovule has got only one integument, that is called unitegmic. साइकस जो है उसको एक ही इंटेगमेंट होता है ओव्यूल को. यहाँ पे दो हो गए हैं, इसे बाइटेगमिक कहते हैं, उसे यूनिटेगमिक कहते हैं. ये ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन अनदर इज देयर माइक्रोपाइल. That integuments do not cover the nucellus central mass completely, leave a minute aperture at the end, and that aperture is known as what? That pore of the ovule, and that is called as the micropyle. Okay, तो micropyle का भी use क्या है? Through that only the pollen tube carrying male gametes can enter inside the ovule. उससे ही पोलन ट्यूब जो मेल गैमेट कैरी करती है वो अंदर आ सकती है, उससे ही वो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना जीरो है. ओके. देन सेकंड थिंग इज दैट व्हेनेवर द एम्ब्रियो इज फॉर्म एंड व्हेनेवर इट अंडरगोइंग जर्मिनेशन, द फर्स्ट रेडिकल जो है मूलांकुर,
वो माइक्रोपाइल से ही बाहर आता है, एंड दैट्स व्हाई माइक्रोपाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर फॉर द दैट ओव्यूल एंड सीड. Then chalaza is the opposite end, basal end of the ovule, opposite to the micropyle, basal end of ovule. Okay, उसको chalaza कहते हैं. Nucellus is the central fleshy fertile mass of ovule. Fleshy fertile mass of ovule. Very clear. Okay, MMC क्या है? That only one cell becomes very active, and that becomes the mother cell now, megaspore mother cell. And what is the ploidy level of that? It is diploid. Megaspore mother cell is diploid. Then what is megasporogenesis? This megaspore mother cell undergoes meiosis to produce 4 haploid megaspores, and that process is known as what? That is known as megasporogenesis. उसको ही कहते हैं megasporogenesis. Very important. Then megaspore tetrad जो बनता है उसके बारे में भी हमने कहा था. एक तो ये tetrad है linear. Okay, out of 4 3 degenerate. 3 degenerate हो जाते हैं. वो कौन से होते हैं? They are present from micropylar end. माइक्रोपाइल से जो 3 आते हैं पहले वो डीजेनरेट हो जाते हैं, एंड ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल. वो फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा है, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है. तो क्या कहेंगे आप लोग? मैंने बताया था पिछले वीडियो में फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा है. द फंक्शनल मेगास्पोर इज देयर. उसके बारे में बिल्कुल ध्यान में रखो. 4th from micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड से चौथा, एंड 1st from चालाजल एंड. चालाजल एंड से पहला. बिल्कुल एमसीक्यू में आ सकता है, तो उसके लिए बिल्कुल ध्यान में रखो मेगास्पोर टेट्राड के ये पॉइंट. ओके, एंड नाउ दैट डेवलप्स दिस मेगास्पोर. Functional megaspore develops what? That is haploid. That single megaspore develops the female gametophyte. ये female gametophyte बनाता है जिसे embryo sac भी कहते हैं, and that process is there known as megagametogenesis. क्योंकि यहाँ पे गैमेट बनने वाला है. मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्टैंड्स फॉर फीमेल. फीमेल के सब पार्ट बड़े होते हैं, सो मेगा स्टैंड्स फॉर फीमेल. सो मेगा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं इसे. फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम सिंगल हैप्लॉइड मेगास्पोर इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस, एंड फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स फ्रॉम एमएमसी दैट इज नोन एज व्हाट? मेगास्पोरोजेनेसिस. ये दोनों में फर्क जो है वो ध्यान में रखो. अब ये 7 सेल्स और 8 न्यूक्लिया कैसे हैं? इसका फीमेल गैमेटोफाइट का स्पेसिफिक फीचर क्या है? इन एंजियोस्पर्मिडीज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड. तो ये तो बिल्कुल आपको लर्न बाय हार्ट होना चाहिए. अभी 7 सेल्स मैं लिखूंगा नहीं, आपको तो बिल्कुल लर्न बाय हार्ट होना चाहिए. 7 सेल्स कौन से हैं? One, that 3 cells are present towards chalazal end known as antipodal cells. 3 cells are present towards micropylar end, and they are forming the egg apparatus. In that egg apparatus, the central cell is the main, that is called the egg cell, or that is called the female gamete, for which this structure is all built up. क्योंकि उसको ही फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनाने का पोटेंशियल है. So all reproduction is there basically coming towards that particular egg. So that egg apparatus 3 cells. Out of that single central cell is the egg cell, and 2 lateral cells उसके जो आते हैं उसके कहते हैं synergites. इस synergites के बारे में एक पॉइंट मैंने बताया था. They are assistant cells actually, and their cell walls are forming special thickenings to form a structure known as फिलीफॉर्म apparatus. वो रेड कलर से मैंने दिखाया था फिगर में लास्ट इसमें.
that filiform apparatus is guiding the pollen tube towards the female gamete for fertilization process that helps in fertilization. Antipodal cells are particularly nutritive in function probably. And then single cell remains now. 3 cell हो गया antipodal, 3 हो गए एक apparatus. All that 6 cells are haploid, my friends. Haploid level बहुत important है. All 3 antipodal cells are haploid. All 3 cells of the egg apparatus are haploid. 6 cells are haploid. 7th cell is diploid. And that is called the central cell, or that is called the primary endosperm nucleus. And it contains what? That is secondary nucleus. It is called the secondary nucleus. Okay. And that secondary nucleus is useful for double fertilization. उसमें 2 nuclei है. They are called the polar nuclei. And that cell is the central cell or secondary nucleus that is required for taking part in the double fertilization जो अभी हम learn करने वाले हैं. So all these points which we have given, एक तो एक फीमेल गैमेटोफाइट बनने के लिए, और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये फीमेल गैमेटोफाइट बनने के लिए क्या क्या लगता है. That single female gametophyte can be formed by 1 meiosis and 3 mitoses. एक मियोसिस डिवीजन और 3 माइटोसिस डिवीजन की सहायता से ओनली ये फीमेल गैमेटोफाइट बन सकता है. तो ये भी एमसीक्यू आता है. सो ऑल दीज पॉइंट्स डू रिमेंबर वेरी केयरफुली. ड्रॉ द स्ट्रक्चर बाय योर ओन. पहले फिगर आपने आप निकालने की कोशिश करो, उसको लेबल्स दो, और ये लेक्चर आपको बहुत काम में आएगा, बिकॉज दैट इज ऑल पॉइंट्स आर समराइज विच आर having a potential to be asked in the form of MCQs. So I'm confident that you will prepare this article, you have understood this article very nicely with me. So do like and share this video to your friend circle, and we shall meet again in the next video. Do subscribe to my channel XIIth Biology and XIIth Biology Shorts. And also for your knowledge, you should subscribe to my another channel, that is XIIth Chemistry and XIIth Chemistry Shorts. I used to cover both the subjects, chemistry as well as biology. So do follow that. Thanks a lot.